returns, their job is much more important than people like us who do private business. हमको ये कुछ नहीं देखना है, लेकिन आप लोगों को, because you are the people who do compliance, you are the root cause of litigation. Litigation starts with you. A list in a tax matter starts with filing of a return. So return checking is very important. And how much time you have to adjust? 16/4. जो भी एडजस्टमेंट करनी है आपको 16/4 के अंदर करनी है, अगले नवंबर तक. उसके बाद रेक्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. There was a view that the returns can be revised before the assessment. A Supreme Court in Guats India Limited versus Union of India, they laid down the principle that can you revise the return after 30 rupees? The answer is no. And they confirmed in Bharti Airtel that 39-month returns, you cannot go beyond this statutory period. Therefore, your fund is rejected. Right? So even when you file this Form 9, your जो भी होता है, you make sure that again spend time. भाई की tell you charge the client के बहुत सारा देखना है तेरे को, कि कल को 4 साल बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं पता. Supposing tomorrow a Delhi Advanced Ruling Authority says that these sales are held to be intrastate sales, whereas you had shown them as interstate sales. So what happens? So you have a problem. अब जब क्लाइंट को बोलोगे ना साहब इसमें रिफंड मिल जाएगा 19 में भी जमा करा दो, वो तुम्हें गोली मार देगा. रिफंड लेने के तो जूते घिस जाएंगे सेक्शन 19 में. So the person will also examine before he gives the refund. यदि आपकी क्या सेल है, सेंटर से रिफंड लेना आपको उसका, right? So supposing it's 10 crore at 28%, 2.8 crore plus interest plus minimum penalty. For what? Because somebody did not go through the documents whether this is interstate sale or intrastate sale. So notwithstanding section 19 where there is a provision to claim refund for wrong tax paid under IGST, wrong on what basis? You treated them as interstate sales whereas they were intrastate sales. Refund is only on this ground in section 19. There is no other ground in section 19 of IGST Act. Only this ground. So if you want to claim refund, onus is upon you to prove that this was an intrastate sale. By mistake I showed them interstate sale. So these sections 7, 8, 9, 10 are extremely critical for you. People who file returns, big returns, where there is a most picture of, supposing you show something as 0 rating sale. कल क्यों बोल रहा था हमने एक्सपोर्ट गर्ल से दिखा दिया, बच्चे ने क्या दिखा दिया. This is fraud. This is not a mistake. Intrastate sale, interstate sale is a matter of pure documentation. गलती हो सकती है. 0 rating is you have intention to claim refund of unutilized credit. If you are not making 0 rating sale by paying exports, by GST on exports. So the intention is built in. कि आपने जबरदस्ती इसको 0 rating दिखाया. कल बात कर रहे थे वो, you have to take the goods out. There is no penultimate exports allowed in GST for the time being. Right? With this background, let's start section 16. जहाँ आपको रिफंड बेसिकली मिलता है IGST. We are not doing rules because there are two kinds of legislations. One is a parental legislation. One is a subordinate legislation. What we are doing, reading, is a parent act. Whatever rules exist, they cannot go beyond this parent act. Whatever notifications are issued, they cannot go beyond this act. We will only read rule 90, which is relevant for refund on exports. Other rules of procedure we will not discuss in the class, you can read it yourself. But wherever they are important, we will discuss. Go to section 2, subsection 23, IGST. 0 rate supply shall have the meaning assigned to it section 16. So if there is any, if this definition exists in any other tax act, it's irrelevant.
they say this definition is section 16 बस और कुछ नहीं है. Let's go to section 16. There is no rule to this and there is no form also for this. Zero rate supply means, I told you most of the IGST provisions are, they start with means. So this is the only meaning, there can be no other meaning. Any of the following supplies of goods or services or both, namely, any of the following, they didn't write any of the two, so tomorrow they can add, can be 3, 4, 5. So that's why they say any of the following. So whenever legislature uses the phrase any of the following, this means there is a potential to increase this further. अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत तरह की जरूरत सप्लाई है, हमारे यहाँ नहीं है. Export of goods or services or both. Go back to section 2. Read what is export. Read it again. Subsection 5, subsection 6. So what does this section say? Export of goods or services or both. Export of goods means taking out of India to a place outside India. India is defined in section 2 CGST Act. So you have to go beyond those nautical miles only then when goods are taken out. Say for example, a ship comes from Singapore, it is standing on high seas. Ship captain comes here to Suresh Agarwal कि मुझे ये पेट्रोल प्रोडक्ट चाहिए शिप के लिए. Ship is going back to Singapore. Right? He is not taking out of India. He is taking, not export in his hands. This was a ruling done by Supreme Court in Burma Shell versus State of Maharashtra in Central Sales Tax Act. So what is the meaning of taking exports of taking goods out of India? Means you must take. Who's to claim refund? You. So it's implicit in this phrase that the person who claims refund, he must take out the goods out of India. Right? Only for the purpose of tourists, there's a provision. But they have a boarding pass and a ticket going out of India. They cannot use the goods in India. They have to go out. And they cannot come back. Right? So there in that case, all the countries allow that we will give you refund of tax paid by you. But not in other cases. So export of goods or services. So what is service? Whatever is not good is service. That's the definition of service in section 2 CGST Act. Again means taking, again it means service, supply of any service when this 5 conditions you have to satisfy cumulatively, one by one by one by one. If you do not satisfy any one of the conditions, there is no export of service. So what is the implication of the definition again? Once you invoke section 16 to claim unutilized input tax credit, then you have to satisfy yourself that these were export of goods or export of services. Don't jump and file refund application. Don't jump. Otherwise you will be in the category of risky exporters. First satisfy कि goods export हुए किसने किए. Go through documents. 10 applications, go through for all 10 applications. Don't have a preconceived notion, हाँ ये भट्ट साहब का कहते ठीक ही होगा. No, this is not our job to draw presumption if somebody is right or wrong. You go by documents, what documents speak. Similarly, export of services, satisfy all the requirements before you file refund application. Before you claim that this is a zero rating supply in section 16. Yeah? That's why we need to read definitions again. Come back to section 16. So zero rate supply means any of the following supplies of goods or services both, namely export of goods or services or both. What could be both? What could be both? As an example though. Example दो, both क्या हुआ? Goods में समझ आता है, सर्विस भी होता है, both कैसे होंगी? एग्जाम्पल दो. जैसे इंश्योरेंस वगैरह इसके साथ होता है. गुड्स डिलीवर कर रही हैं FOR बेसिस पर कंपोजिट सप्लाई है ना, मतलब उसमें सर्विसेज भी है. अगर कोई गुड्स भेज रहे हैं उसको सर्विस के लिए भी
Now, a composite, both when we say it means there are goods. The second thing you have to say, this is service. Anything which is not with service. Ocean freight judgment of Supreme Court was only on this ground. They say the ocean freight was a part of CIF value. So one CIF value means cost includes insurance and freight. So along with goods, the exporter also did a service to you by way of freight and insurance. Therefore, once it became a composite supply, he cannot be a recipient of goods in India. They said you cannot tax it. You cannot charge tax again. He already, whatever he did is part of the export. Supposing import. Not supposing you have to export. Supposing we have a contract, if we want to sell you a turbine worth 10 crores, including installation. And you have two separate agreements. This is composite supply, goods and service support. Go back to the judgment of ACC versus Union of India done by B.N. Kirpal, where they said works contract is a composite transaction. Even if there is a minuscule percentage of service, this will amount to transaction of works contract. So they distinguished the earlier judgment. They say that rainbow color judgment of Supreme Court did not lay down the correct law. So when we say goods or services or both means it's a composite supply or a mixed supply or a works contract. Works contract is declared a service in any case. So works contract is not both. Works contract is declared service. So you are left with only mixed supplies or composite supply. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज सर्विसेज डिक्लेयर्ड है उनमें गुड्स आपको कोई डिस्टिंग्विश नहीं करना, जैसे फ्लैट रेट व्हाटएवर इट इज अवेलेबल. सो व्हेन यू एक्सपोर्ट अगेन यू हैव टू कम वेदर दे आर बोथ गुड्स हैं ठीक, सर्विस हैं ठीक है, तो बोथ कैसे हैं. आपको सर पे आईटीसी रिफंड मिलेगा, बट एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू कीप अप्लाइंग योर माइंड ऑन एवरी ट्रांजैक्शन यू कम अक्रॉस. समटाइम्स यू नो हाँ ये हमें पता है यार वो एक्सपर्ट आता है. अगर आता होता तो इसके लिटिगेशन तो नहीं होते ना. वी ऑल प्रोफेशनल डू इन हरी, फटाफट लिखते हैं अरे पैसा. नो, every case you get 10 cases in a day on this issue, examine 10 cases afresh. It will give you a lot of energy to understand law, to apply law, to see different documents, to see different transactions. You learn more free of cost. You get money for learning, you know. Client pays you, you are learning, but keep learning. A lawyer should never sit down with a preconceived notion, I know it. No, you don't know. But we are going to tell you on interest today. I'm sure you would have never ever read. But this is updation. You continue to study, update your law. And this is one of the processes of updation where you examine every case, 10 cases of the same nature. अब ये कश्मीरी गेट के किंग है, इनको पता है ऑटोबट वाले क्या क्या करते हैं. But every time they get a case, they must examine it. Charge the client. क्लाइंट बोलेंगे आपको पता है कि हमें नहीं पता. ये लॉ है सर, हमें दोबारा देखना है, इसको लॉ चेंज होता रहता है, राइट. सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट. Now, what is supply? Supposing you give goods on approval, is it supply? So you have to understand meaning of supply. Supply means supply is for a consideration defined as per section 7, read with section 7 of IGSTI. Goods on approval is not a supply. It's a unit-enter transaction. Only when a recipient accepts the goods like a job worker. Why you can dispatch the goods without payment of tax? So this does not apply to him. Only when he completes the job work and the time limitation is over, it is deemed to be a supply. So the law presupposes it should be supplied to whom? Only to two purposes: special economic zone developer or special economic zone unit, और कुछ इसमें mention नहीं. So if the supplies are being made to a co-developer,
you have to see the definition whether developer includes co-developer. It does. But if it doesn't, then he is not involved. Looks so simple. ऐसी दैट को हाँ माफ है, किस लिए माफ है, क्या है वो? आज जो आप कल बीएन में वाली बात कर रहे थे, they are not covered here at all for anything unless they say they are a SEZ unit or SEZ developer. So whenever you invoke other acts for defining something, whatever has been decided by courts in that particular parent act shall also be applicable here. Supposing E&Y office, accounting office or a law office is recognized as an SEZ unit, they are entitled to benefits, subject to goods being used by them for the purposes of their activities. मतलब सीडी बना के 100 टन पेंट नहीं खरीदेंगे वो, उस पर रिबन नहीं है. Now since you are giving them with or without payment of tax, onus lies upon you. This is very, very critical. They have to prove nothing. Claim is yours. Export आप दिखा रहे हैं, zero rate supplying आप दिखा रहे हैं, ये proof आपको करना है. So whenever you see a document, whenever you have this transaction to SEZ, read the law again. The section 2G or 2D में क्या लिखा है कि what is SEZ unit और SEZ developer, इनका क्या मतलब होता है. अगर वो आपके पास documents हैं which prove that these are so, you can do a zero rate supply. If not, you cannot. So most of the time, at least I have one particular matter where they wrote stamp लगाया हुआ था लंबा लंबा zero rate supply under section 16(1) of IGST Act. तो किसी ने पकड़ लिया, दिल्ली के अनंतवाड़ी का केस है, उसने पकड़ लिया, हमारे पास आया, मैं कहते डॉक्यूमेंट लाओ, कहते जी हम का रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट में मुझे नहीं आपने जीरो रेट कह दिया, कहते सर वो कह रहे थे हम ऐसी लेट लिए. तो बेन लॉयरी था, यंग लड़का था, उसको पढ़ाया, मैं कहा पढ़ो, मेरे ऑफिस में आया, ऐसी डायरेक्ट निकाला, उसको दिया, पढ़ो, विड्रॉ दिस फाइल गंदी मत करो, सच्ची मिल रहा हूँ. आगे चलने से मैं क्या करूँगा, लास्ट चेंज कर देंगे हम, क्या नहीं होगा. So therefore, export of goods or services or both is the first zero rated transaction. Second is when you are supplying goods or services or both to SEZ unit or SEZ developer as defined in SEZ Act. Section 2 defines what is SEZ Act or a developer. Then it's a zero rating applied. So what is the consequences of it? Let's see. Subsection 2 is very important. Subject to provisions of subsection 5 or section 17. Go back to section 17 CGST Act. Section 17 deals with two issues: apportionment of credit and block credits. It's not only block. That is, input tax credit is available to you if you make a taxable supply. Right? That is the purpose of section 17 comes. कि आपने नॉन टैक्सेबल किया तो आपको आरटीसी रिवर्स करना है, और जो क्रेडिट ब्लॉक था उसको आपको नहीं मिलता. बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट दे अलाउ exempt supplies also. For subsection 2, they have overruled section 5. Subject to provisions of subsection 5, so and so, the credit of input tax may be availed for making zero supplies, notwithstanding that such supply may be an exempt supply. Go back to subsection 47 of section 2. Read what the exempt supply. Go back. CGST Act 2 subsection 47. I think it's 47. Exempt supply means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 and includes non-taxable supply. जिस पे टैक्स रेट 0 है उस पे भी आपको रिफंड मिलेगा. And includes non-taxable supplies, that is, which are not covered by section 9. Right? So that is why zero rating concept is totally different
from taxable supplies. They are taxable supply, exports are taxable. But जो आपको zero rate पे refund मिलना है, this includes exempt supply as well. So if you do not read exempt supply, notwithstanding that such supply may be an exempt. Notwithstanding means कि even exempt तभी मिलेगा आपको. What use is notwithstanding? It overrules section 75 to this extent. एग्जाम सप्लाई भी अगर आप करते हैं, अगर 100 रुपए में से आपकी 20 रुपए एग्जाम सप्लाई की, उस एग्जाम सप्लाई को यूज करने के लिए भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, उसका भी रिफंड मिलेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन 2. So how will you make a chart? I am a 100% exporter, say for example 100% exporter. आपने एग्जाम सप्लाई क्या की, जिन पे जीरो टैक्स था मैंने एक्सपोर्ट किया, नॉन टैक्सेबल था मैंने एक्सपोर्ट किया, रिफंड आपको सबका. That was the concept in excise, custom and service tax, and here also. Notwithstanding it was an exempt supply, that there also it will be included in zero rate supply. That is the meaning of subsection 2. क्या नाम है? 75 का ब्लॉक क्रेडिट छोड़ के सारे क्रेडिट आपको मिल जाएगा. Yes, yes. Even if it is an exempt supply, Yes. But wherever the credit is blocked, that is not overruled here. They are overruling कि exempt supply का जो आप apportionment section 17 में करते थे, वो यहाँ नहीं करना. बस to that extent there is an exception created in subsection 2. अब कारें मारे हैं, ब्लॉक रहे हैं, सबको आपको कुछ नहीं मिलता. अब देखो कितनी बड़ी सही है. जो आप लोग रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो, आधे घंटे के अंदर साइन करा लेते हो डीलर से पैसे लेने के लिए रिश्वत की ओवर फीस पे, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है. इट शुड टेक यू 2 or 3 days बिफोर यू डिसाइड किसका रिफंड कितना बनता है. Even if you take the refund by paying money or whatever you guys do here, it will be recovered back, and that will be a problem. Then your all 4 or 5 years will be subject to scrutiny, and your client will have a lot of problems. So whenever you apply refund application, go through it carefully. It doesn't take much time. हो सकता है उसकी कुछ भी ना हो. दिल्ली बैंक में भी दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजमेंट थी where they interpreted exports including tax-free supplies, and they allowed full input tax credit refund. But here the law itself provides it notwithstanding the supply was exempt supply, right? So whenever you have these words in the law, keep going back to section 2 20 times, 30 times, 40 times. Keep reading section 2. It will make you interesting कि हाँ मेरे को दोबारा पढ़ना है, इसको सब याद हो जाएगा. Subsection 3. A registered person making zero, registered person is section defined जिसके पास GST certificate है in the form prescribed. Making zero supply shall be eligible to claim refund under either of the following options. So when you have either is followed by only 2 options. Either cannot be many options. If there are many options, they will write any of the following options. So either option means there can be only 2 options. Either of the following, namely means again restrictive provision. He may supply goods or services both under bond or LUT, subject to such conditions, safeguards and procedure as prescribed, without payment of IGST and claim refund of unutilized tax credit. So this is the only way you get cash refund. बहुत complications है. एक तो LUT की वो हर साल क्या करना है, I think you all know, I don't know about it. अब जब LUT में सप्लाई करते हैं आप, now supposing you have a transaction, it's a debatable issue which I am raising. आपकी 100 करोड़ की टर्नओवर है और आप कहते हैं 3 करोड़ मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है. आपका एक्सपोर्ट 40 करोड़ का है. Is there a rule that proportion like this? yes sir. क्या रूल है? सर ऑटोमेटिकली उसमें हो जाता रूल 96 वाला 89(4) में है कि जितनी आपकी वो है एक्सपोर्ट टर्नओवर उसी रेट में डिवाइडेड बाय टोटल टोटल टर्नओवर टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी, मतलब जो सर अलाउड. एक्चुअली एडजस्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन दी गई है, तो फॉर्मूला जो करा है कि जो आपका जो गुजरात हाई कोर्ट ने उड़ाई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कंफर्म किया. की थी. हाँ. तो एडजस्टेड टर्नओवर में आपका जो टर्नओवर आती है वो टैक्सेबल तो टर्नओवर. दैट मीन जो एडजस्टेड टर्नओवर के नीचे सारे कंपोजिशन है वो सारे उसको फार्मूले में लाने हैं आप, यस इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई. exempt supply, Exempt नहीं होता. including exempt supply, पर exempt
जीरो रेटेड सप्लाई उसमें ऐड होता है, पर एग्जाम सप्लाई ऐड नहीं होता। अगर जो हमने एग्जाम सप्लाई अभी डेफिनेशन पढ़ी 247 की, वो ऐड नहीं होती एडजस्टेड टर्नओवर के अंदर, वो एक्सक्लूड करी गई है एडजस्टेड टर्नओवर। उस पर रिफंड नहीं देते। जो उसके साथ रिफंड मिल जाएगा अपने को, अगर हमने एग्जाम सप्लाई को एक्सपोर्ट किया है तो जीरो की बात ही कर, जीरो पार्ट ऑफ जीरो रेटिंग ना, मैं क्या बोलूं उसमें नहीं मिलता है। टोटल टर्नओवर और उसमें जो टैक्सेबल टर्नओवर उसका बाइफर्केशन होता है ना, उसका proportionate. So we take it granted there's a formula that discounts zero rating other supplies. आप सपोजिंग आपके पास 100 करोड़ की सप्लाई थी और 3 करोड़ का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आप कहते हैं मेरा 40 करोड़ का एक्सपोर्ट है, 20 करोड़ की नॉन टैक्सेबल सप्लाई है इंडिया में, 10 करोड़ की एग्जाम सप्लाई है, बाकी मेरी टैक्सेबल सप्लाई है। तो आपको सारे प्रोविजन अप्लाई करने हैं। 40 करोड़ का आपको रेशियो अप्लाई करना है, बाकी 20 करोड़ का आपको अपॉर्चनमेंट करना है, उसका आईटीसी रिमूव करना है और बाकी पे आपको लेना है। So that means are you saying कि 40% में तो पूरा आईटीसी मिल गया, 20 I remove and remaining 20 I get। उनका कोई फैब्रिकेशन नहीं करते आप? उसका होता है वहीं पे टेबल दी हुई है। अभी आपने एग्जांपल दिया कि 40 इज माय जीरो रेटेड, 20 इज माय नॉन टैक्सेबल, 10 इज माय एग्जाम एंड अदर 30 इज माय टैक्सेबल टर्नओवर। तो इसमें जब हम रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले तो 20 और 10 के जो अपॉर्चनमेंट है 70 में वो हटा देंगे, वो 3 करोड़ में से क्रेडिट हट जाएगा हमारा। मान लीजिए 20 टैक्स हट जाता है, 280 के लिए हम 280 को So that means you do a backward calculation not forward calculation। पहले आप रिमूव करेंगे जो आपको नहीं मिलता। हाँ, जो हम, क्योंकि सर वो तो हमें 3B नहीं करना था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द 3B, तो हमें वो उसको करना था। Is everybody listening? हाँ, तो हमें वो 3B में ही करना था। 20 लाख तो वहीं पे हो गया। जब हम रिफंड अप्लाई करेंगे तो 3B में हमने इनपुट टैक्स नहीं दिया 280 का नेट आईटीसी जो हमने दिया है, तो 280 को हम अपोर्शन करेंगे 40-30, मतलब 40 और 70 के रेशियो में, क्योंकि 40 हमारा जीरो रेटेड था और 30 हमारा टैक्सेबल था, और तो हम डिनोमिनेटर में 70 डालेंगे, ऊपर 40 डालेंगे, 280 का ऑटोमेटिकली एडजस्ट। उसमें से केवल आपको फिगर डालनी होती है कितना अमाउंट है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है उसको, वो मतलब आप उसमें मैनुअली कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैनुअली कुछ नहीं करना होता मैनुअली। सो दैट मींस so once you apply for refund this exercise has to be done. If it's automatic on returns I am not aware, I don't know about it। नहीं सर, ऑटोमेटिक सर ये जो अपॉर्चनमेंट है वो हमें 3B के टाइम पे हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर वो किसी ने अप्लाई 3B भरते हुए वो अपॉर्चनमेंट नहीं करी और वो 3 करोड़ से क्रेडिट ले लेता है, तो जेन 20 लाख का जो हमें हटाना था वो उसका भी क्रेडिट ले जाएगा ऑन द रेशियो, तो वो हमें ध्यान रखना होता है जब हम रिफंड। Okay, right। So far section 16(1) says कि zero supply में means this: when you export goods or services or both. Export means you yourself take out of India goods or services or both. You are entitled to and utilize the ITC refund in cash. When you talk of refund, we are talking of in cash. I am not talking of set-offs. Second is when you make supply of goods or services both to SEZ unit or developer. Then subsection 2 gives you on what will you get refund. What is the turnover eligible for the purpose of refund? This includes exempt supplies. Exempt supply is defined by section 2, section 47 to mean where there is a nil tax under section 11 or section 6 of IGST Act, including non-taxable supplies. So इस पे भी आपको exempt supply मिलता है। Now supposing a liquor shop, I'm asking a question. Liquor shop export करता है सारे goods, उसमें liquor भी export करता है। What happens then? non-taxable सब Non-taxable, non-taxable supply. बट इसमें नहीं होगा ना सर वैट एक्ट में मिलेगा ना फिर उसको? लिकर वैट में मिलेगा। अगर I'm raising a question. अगर एक्सपेंसेस होंगे उसके जैसे रेंट हो गया, सर ऐसा रहेगा ना, जैसे अब लिकर शॉप आपने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर, Just read non-taxable definition. Yes. Before we discuss this. (79)(2). 78. Supply means a supply of goods or both which is not liable to a tax under this act. How will this will include exclude non-taxable? Can you exclude liquor for the purpose of subsection 2? There is section 9 only, nothing else. Which are not liable to tax under this act or IGST Act. That's the meaning of non-taxable supply. I told you very first day, we gave our opinion in favor. Claim.
So lawmakers remove deficiencies, we have no interest. Now these words are defined and these words have no other meaning. Non-taxable supply is only section 9. Also, they are referring under CGST, IGST Act. And they are not saying non-taxable territory, they are saying non-taxable supply. So this can be one interpretation, but other interpretation is also debatable. Once something under section 9 is not subject to charge, how will you get refund? But so is the exempt supply, is not subject to charge. Tax उस पर नहीं लगता. सर वो जीरो रेटेड ही नहीं है. कैसे नहीं? नॉन टैक्सेबल है ना. कहते नॉन टैक्सेबल इंक्लूडेड है. एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल इंक्लूडेड है ना. 3 to 47. नहीं बट Read to 47 है. Read to 47 again. Then we read again. अभी बट वहाँ पे कह रहे हैं credit of ITC may be availed for making zero rated supply. हाँ. आगे चलो ना. आगे चलो. आगे चलो यार खत्म नहीं होता ना. Notwithstanding that supply may be an exempt supply. इसका क्या मतलब? तो जो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड होगा. Sir, but such supply means zero rated supply. Zero rated supply is an exempt supply, but it is not zero rated. It is non-taxable. मतलब जो liquor है. Zero rate supply includes all this, no? That means you will not include exempt supply also. For refund purpose. Forget section 9. जिनमें जीरो रेट है उसको भी नहीं लेंगे आप. Can this be interpretation? This is possible interpretation. Nothing wrong in discussing this. But will you not take it? As a lawyer, I will take it. There can be no other. There is no ambiguity here. Right? Okay. We'll leave this question still for the time being. We'll discuss it once again. Or he may, the word is or, either of the following. He may supply goods or services of both subject to such conditions, safeguards and procedures as may be prescribed on payment of the IGST and claim refund of such tax paid on goods or services of both. आपने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 18% 1 करोड़ 80 लाख दिया, आपको रिफंड मिल गया. सपोजिंग आपका आईटीसी 2.5 करोड़ का था, तो क्या होगा 70 लाख का बाकी? पेमेंट हमने सारे के सारे से करा है, तो हमें सारे का ही मिल जाएगा, बट इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. Okay, I am raising a question. Supposing for the 10 crore which were taxable 18%, your inputs were 28%. Simple. Okay. हाँ. Then what happens? नहीं जाएगा सर inverted. क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा. You can't have two transactions, pay tax and claim inverted, export. Then we have to mandatorily go in LUT, then we should claim. So what happens if 70 lakh rupees? My question is nothing. Supposing a lawyer or CA exports यार IGST करके नीबत काटना अपनी, तो तुम्हारे अमीर बंदे दादा कहते हैं 80 लाख का क्या हुआ? 80 lakh still remains your books unutilized ITC, which you can set off as per section 49(5). It's not disturbed. What you're getting is what you have paid tax. Your ITC still remains in books. That is the meaning of or. जो इधर और उस और का मतलब सिर्फ ये है कि आपने जो टैक्स दिया आपने रिफंड ले लिया, आपने आईटीसी छेड़ा ही नहीं उसमें. Your ITC still remain in books. If you want to make an output supply, set it off, then set it off. There is no bar, right? Shall be eligible to claim refund under in accordance with provision section 54 of CGST Act or rules made thereunder. So zero rating definition is as per IGST definition as per section 16. 16 has 3 subsections. 1, what is zero rating? Second, how do you claim? And second, under what condition can you claim refund? And you utilize ITC or where you export goods by paying tax. Now you know exporting goods is something tangible, where something can move physically. Export of services is a very ticklish issue. It's basically online. उसमें section 13 का रोल बहुत बड़ा आता है. There are 2 POS sections, section 12, where both location, the location of square keeping is in India, where section 13 deals with where one of them is outside India. We are not touching place of supply because it will be totally chaotic then. वो बहुत बड़ा
2 दिन का है वो सारा कुछ करने के करेंगे जरूर, बट अभी रिफंड में उसको टच नहीं करेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू आर डूइंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, you must read subsection 3 to subsection 13 of section 13. Yesterday we discussed the default rule. India बाहर है, खत्म होगी बात, but that is subject to section 3 subsection 13. तो अगर आप उन exceptions में आते हैं तो you have to be careful whether you are in the category of export of services or not. दोनों 12-13 दोनों सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए नहीं, गुड्स के लिए जरूरत नहीं। तो अगर उन आप एक्सेप्शन पे आ गए तो जहां वो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां लिखा है वही होगा। अगर वो इंडिया में आता है तो नथिंग, राइट? सो we are not touching section 12 and 13 for the time being. We will touch it maybe tomorrow or day after before we close this session on Saturday. We will do it, but today we will not touch because we are going to do section 54. So section 54 we are dealing with refund in cash. Section 54 has no other purpose. Otherwise all ITC is available to you, there is no bar. You can claim input as credit on everything by default rule except what is not available in section 17. Law does not debar any other input as credit. It's safe. But if you do not know section 17, you cannot decide whether to claim or not. Supposing a client comes to you, he says कि मेरा जी 1 करोड़ का इनपुट क्रेडिट है, ला भी डॉक्यूमेंट ला। पहला कहते हैं मैंने एक मशीन की गाड़ी खरीदी है 1 करोड़ की, मेरा है, क्लेम कर लिया। दूसरा क्या खरीदा जी हमने अपना 2 वैन खरीदी हैं, डिलीवरी वैन, बस उस पर तो अलाउड है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, तो यू हैव टू सी वेदर ही फॉल्स इन दैट एक्सेप्शन। डोंट जंप कि उसमें मिलता है, बस का भी 13 और ऊपर का है, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन कि उसको मिलेगा। यू से कि वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू डू डिलीवरी। फॉर एग्जांपल इज ए टैक्सी डीलर, ट्रक के बिना उसका काम चलता नहीं, राइट? सपोजिंग यू आर अ लॉ फर्म, कैन यू गेट ITC for a delivery van? Are you going to deliver babies there or what? Right? That is a contextual reference to what you are doing is extremely relevant for the purpose of section 17. Don't jump tax and तो ले लो, don't jump. Medical health care, वो कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए खर्च किया है, 5 लाख रुपए स्टाफ वेलफेयर दिया, मेरे को इनपुट टैक्स लो, it's not allowed. But if it is a hospital and he is sending a patient and hospital is paying, it's allowed. So a contextual reference is very critical before you allow or disallow or apportion input as credit under section 17. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू से कि आई एम ए फैक्ट्री, इट्स मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट दैट आई हैव टू गिव द ट्रांसफर सर्विस टू एम्प्लॉइज, इट्स अलाउड. बट व्हेन देयर इज नो सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अलाउड, राइट? तो बिफोर यू डिसाइड इसका मिलना है या नहीं मिलना है, ये आपकी ड्यूटी है एज प्रोफेशनल्स to go through section 17 carefully, can we get it or can we not get it. For example, कौन बनेगा करोड़पति? They spend, I am told, around 2 crore rupees on Amitabh Bachchan dresses and makeup per show. 2 crore का कॉन्ट्रैक्ट है बॉम्बे में किसी के पास। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ की वो सहेली है जो इसका सब काम करती है, 2 करोड़ रुपए लेती है। Will you allow it? Very debatable issue. और तो सारी कहती हैं कि आपने हस्बैंड यही बोलते हैं मेकअप करके आए, पैसे तो खर्चों अलाउड है, खर्चों में अलाउड है सब कुछ। You have to examine. Beauty business service का disallowed there no exception. That is, you have a good point. उसके बिना शो चलता नहीं। भाई ये कहाँ लिखा है अमिताभ बच्चन ने 5 लाख अरमानी का सूखना पहना तो वो नहीं कर सकता? When you say जरूरत means without this something cannot happen. So even if he comes in shorts and t-shirt, he can still run the show, people will still say he doesn't know if he has 5 lakh अरमानी. कभी सभी को पहन के आता तो कभी जूता पहन के, हैं?
कभी स्लीपर पहन के आता है, कभी जूता पहन के So आता है। the jokes apart, idea is you have to again examine कि इतनी बड़ी फिगर है, इसका क्या करना है। तो जो उसकी पर्टिकुलर एक्सेप्शन है, आपको उसी में रहना है। उसमें वो आपका सेटिस्फाई करते हो तो मिलता है, नहीं मिलता तो नहीं। नो लॉजिक, टैक्स नोज नो इक्विटी, टैक्स हैज नो लॉजिक, टैक्स इज व्हाट इज रिटन। अभी परसों हमारे चीफ जस्टिस ने बोला, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी नो नथिंग एल्स, सो यू आर सर्वेंट ऑफ दिस जीएसटी एक्ट, व्हाटएवर शिट दे हैव मेड, आपको इसी में रहना है। तो ध्यान रहे, whenever you claim refund, especially in cash, you are taking money from the government exchequer, and if you are wrong, it's a very serious offense. कि आपने गवर्नमेंट के पैसे अपनी जेब में डाली, वो क्या आ गया, मैंने उसको 10% दिया था सर, उसने मेरे को 100% रिफंड वापस कर दिया, हमने ले लिया। तो notwithstanding what you do in practice, that's your own conscience, but जब आप पेपर बनाए उसमें आप जरूर देखें। That's the idea. Come back to section 54. एडमिटेड अगर हम सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम आईटीसी ना रिफंड ना लेके तो हम अपने टैक्स और सप्लाई में यूटिलाइज कर सकते हैं ना। वो करो। See, you have it's a very good question he has raised. Supposing you apply refund based on annuity, तो आपके वो ECR को डेबिट कर देते हैं immediately on the issue RFD 02, right? Now supposing when they give you refund, is it possible that you may not have the ITC in your book से बताऊं in PB? Not possible. Not possible. That is, if you have a 100 rupees ITC, you claim 80 rupees, 80 rupees block. This cannot be used. Am I right? So I think then it's okay. 20 rupees will not be. सर इसमें अगर रिफंड के अंदर हम जाते हैं तो जो हमने 3B में क्लेम किया होता है, उस समय जो हमारे आईटीसी में जिस समय हमने 3B फाइल करी है, उस समय हमारे आईटीसी में कितना अवेलेबल है और आज की डेट में कितना आईटीसी अवेलेबल है, उन तीनों का लोअर हमें मिलता है पहले ही। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम जब हमने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया और वो उसके पास क्रेडिट ही नहीं था जो आपने करा। Okay. Come to section 54 CGST Act. First three subsections are very critical. Remaining are machinery provisions, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा कुछ नहीं होगा. We are going to give a very different dimension to reading section 54. Any person, subsection 1 uses the word any person, and if you read proviso, the proviso uses the word a registered person. There is a remarkable interpretational difference between these two. Any person means any person. Person is defined in section 2. चाहे उसने टैक्स दिया है या नहीं दिया है. Even recipient can, like section 47, recipient redeemed exports, recipient can claim refunds. Right? So the word used is any person here. Any person claiming refund of any tax and interest. There is no refund for penalty. It's only tax and interest. Comma, if any, comma, paid on such tax or any other amount paid by him. What is any other amount? जो ये आपने बोले जाते हैं DCR फ्री भर दो, ये कर दो एनफोर्समेंट में, that is the meaning of any other amount. जो भी आप ये एनफोर्समेंट में पैसे जमा कराते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी करते हैं, that is not a tax. It is held by the High Court. This is not a tax. This cannot be appropriated towards tax by the authorities. This money has to be refunded. Unless you create a demand for tax by going through section 73, 74, 75, 76, 77, no tax can be demanded. Or you do an assessment under 61, 2, 3, 4, 5. No tax can be demanded. In Swiggy case, Bombay High Court directed the revenue to refund 33 crore with interest. They filed an affidavit. It was deposited under duress. We were told your MD will be arrested if you don't deposit money. Bombay High Court passed a 40-page judgment saying that such amounts are not tax amounts. उन्होंने बोला कि इनके फ्यूचर में एडजस्ट कर देंगे, मतलब you are sure future will be liability. Have you created tax liability? So till you create tax liability, no recovery can be made. And since this is admittedly not a tax recovery, there was no demand against them. You
coercive, by using coercive method, you recover this money, refund the money with interest. So that is the meaning of any other amount. Any other amount, supposing you deposit when you file appeal, 10%, 20%. If the legislature had not written any other amount, क्या आपको refund मिलता? No, मिलता ही नहीं. I will say sir, कौन से प्रीमियम रिफंड दे बताइए आपको? यहाँ तो टैक्स इंटरेस्ट है, आपने तो प्री डिपॉजिट किया है, वो तो मेंशन नहीं. Again, logically, money should come back to me, but law does not authorize. Like law says, claim the refund within 2 years. तुम्हारा पैसा है, तो 2 साल बाद नहीं देंगे, कोई नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता. Nobody can give you. So that is the meaning of any other amount paid by him may make an application before the expiry of 2 years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed. That is basically your rule 89, 90, 91 rule rules हैं आपके. 2 years before the expiry of 2 years. That is at least 2 years, not 365 into 2 days. Let's see whether word year is defined somewhere here. Section 2 में defined है, देखो ये कहीं. I don't think year is defined. होना चाहिए वैसे. Year is not defined. Okay. So before the expiry of 2 years from the relevant date. So 2 years is condition to relevant date. किस चीज की relevant date आपकी? Relevant date defined है, we will discuss that. So 2 साल खत्म होने से पहले आपको application देनी है. What is application? As per rule 90, I think sub rule 2, RFD 02. 1. जब तक आपके पास फोन नहीं आती 2 साल में, your refund application is not complete. Now provide if your application defective and RFD 02 is right? Okay, 3 is definitely. If they issue RFD 03, then you have to make a fresh application. That is the what is written in section 54. The courts have a different view, right? So supposing you file an application before 2 years, एक हफ्ता पहले आपने डाल दी. Don't be happy. You are bound to get a deficiency memo to make it time back. उन्होंने आपको deficiency निकाल के दे दी. अब आपको दोबारा एप्लीकेशन भर दिया आपने. Then the limitation starts running against you. But it's a fresh application. Therefore, as professionals, you should not take time to file refund applications. Now the question is, if there is a deficiency memo and you remove deficiencies, should it not relate back to the original application? But here law says it will be taken as a fresh application. Therefore, in Jian International Delhi High Court done by my friend Rajesh Jain, they say the rule 92 limitations are sacrosanct. 15 दिन में आपको RFD 03 issue करनी है. If you don't, then you are trying to extend the time for giving refund as per 54(7). Right? So if for the department this 15 days is sacrosanct, for you also 2 years is sacrosanct. Right? Only in COVID period, this relaxation was given by all the courts. If the 2-year limitation, that is a fresh application you filed after the first application, it happened, the courts have said that this is excluded in view of Article 1 for judgment by Supreme Court. The period, provided the limitation did not expire before that. अगर 2 साल पहले खत्म हो गए थे, 15/3/20 से पहले खत्म हो गए थे, then judgment doesn't help you. It helps you if your second application was filed after 15/3/20 or before 28 May 2022. Then this period is excluded and you are deemed to be within the limitation period. So you have to be very careful. If 2 years expire, your client is in trouble. हमारे हम बोलेंगे हाईकोर्ट लेके जाएंगे, हमने पैसे कमाने, हमें पैसा एडमिट मिलना कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग. हमने पैसे लेके बोलेंगे, हम लड़ेंगे, देखेंगे जी क्या होगा, हम संभाल लेंगे, नहीं संभाल सकते. Because in Modi Mills case by 7 judges, Supreme Court dealing with refund law, they said refund limitation is sacrosanct.
No court has power to condone delay. And there is no power here in any case to condone delay. बट सर हमारे काउंसिल मीटिंग में तो दे दी पावर काउंसिल मीटिंग में तो रिलीफ दे दी इस पॉइंट पे क्या अगर कोविड पीरियड में कोविड पीरियड तो उनका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दे कैन गो टू हेल्प। वो एप्लीकेशन फॉर रिफंड के लिए नहीं था पहले नहीं था, हमें 4 केस किए। उन्होंने हाँ नहीं कहता बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, रामबन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ऑल ऑफ गिवन जजमेंट। अब उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, कोई फेवर नहीं किया। सर ऐसा था कि सुरेश सर ने अभी पॉइंट उठाया, बेसिकली क्या कर रहे थे यार मेरे तो सर मत बोला, इतना बुड्ढा नहीं, मेरे को तो बोल दो कभी बार जवान लड़का है यार, कल फूट के पैर याद लगा रहे थे यार। एलिजिबल है अभी यार सब हर काम के लिए ये। हाँ नहीं आगे लगा तो चाटा मार दे ऊपर, सर क्या होता है यार? बहुत बार समझाया तुम रिटायर करने वाले उसको, हम तो रिटायर्ड है, तुम उसको रिटायर करने वाले हो। कल तो तुम इला को बोला कि इला बहन क्या हाल है, ऐसे करके एक बार हुआ था पहले जितना फिर चुका था वो तो पूछा के साथ पूछ जाएगा। हाँ जी पूछ जाएगा। तो सर डिपार्टमेंट हैज अ व्यू कि भाई हम ये लिमिटेशन जो हमारी कोविड पीरियड की थी हम नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने मेरे केस में माना था अनिल बांका ने, ही इज एक्सेप्टेड। सर एक सर्कुलर आया था 2019 दे कैन गो टू हेल्प। हाँ तो वो टाइम सर्कुलर कैन नॉट ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट। तो सर उन्होंने टाइम मार्क कर दिया थे। अब जैसे जीएसटी काउंसिल में इन्होंने अब अप्रूवल दे दिया कि अपील राइट, तो अपील राइट इफ यू हैव अपील लिमिटेशन टाइम। उस समय हमें लिमिटेशन में हमने अपील फाइल कर दी थी कर दिया देन इज एप्लीकेबल, दैट इज उन्होंने RFD 03 भी इशू 100% यू विल गेट रीच, देयर इज नो डाउट। अपील में तो आपको इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा ना, जीएसटी काउंसिल इसने नीचे नहीं माना उसे वो तो मानेगा। Who cares about GST council minutes? We don't even read. I never read the minutes. If law favors me, why will I bother about GST council? क्या circular notification क्या issue करनी है? Circular 124 है यार refund के ऊपर, उस पर लिखा इंटरेस्ट देने का भी दिया आपको किसी ने? क्यों नहीं देते? ये लोगों को दुनिया को खुश चंगा, देखो हमारा लॉ कितना अच्छा, लोगों को खुश करने के लिए हमने सर्कुलर इशू कर दिया है। बीच में लिखते हैं एज पर लॉ, एज पर लॉ तो फिर मेरे काम का घोड़ा है, एज पर लॉ पर बट okay. So before 2 years, so subsection 1 deals with any person. Proviso deals with, provided that a registered person claiming refund of any balance in electronic cash ledger in accordance with provision of section 49 may claim as refund is returned funds in such manner as prescribed. अब इसमें 2 साल की लिमिटेशन नहीं। Cash ledger is TDS basically, or the money you deposit. You are not claiming refund. So proviso does not have a limitation, because a function of proviso is what? It creates an exception to the main provision. Subsection 1 says any person cannot use electronic cash ledger. You have to be a registered person to use cash ledger. That is why in proviso the lawmakers use the word any a registered person can claim money lying in cash ledger within so and so, but there is no limitation. 10 साल के बाद भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो आपका अमाउंट TDS आता है, TDS कम दे इलेक्ट्रॉनिक कैश ledger, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कभी भी नहीं थी, अब इसमें भी नहीं। So now you understand what is the difference between these two provisions? Subsection 1 is all pervasive, any person. The law doesn't use the word supplier or recipient, they use any person. Supplier is defined, recipient is defined. Since the two phrases have not been used in subsection 1, any person means even an alien to a transaction can claim refund. I'll tell you one case. There is a case where I gave opinion on, and refund has been given to the government based on my opinion. I'm pampering myself. एक दो डीलरों का झगड़ा हो गया पेट्रोलियम कंपनी के साथ। Based on a high court judgment, they said this is the rate, they said this is the rate. In arbitration, it took 4 years, 3.5 years, before the rate was decided. Right? So the first person claimed refund. जिन्होंने मेरे से इतना टैक्स चार्ज किया, which is not, I have not asked the customer, I have not passed on the burden to anybody. So there was a debate here. Anand had a lot of debate with me. Then we came to the conclusion any person means any person. So even a recipient can claim refund if he has paid more tax. That is the meaning of any person. If the lawmakers wanted to restrict to only registered persons, then they have used the word what they have used in the proviso subsection 1. Right? Right?
काम तो आपका एक ही अच्छा नहीं है